Morning class. I hope that you are safe and healthy. I would have completed the work which I given you in the last video class. In the last video class, we discussed and completed our chapter comparing quantities. And the last topic was simple interest. And today we are going to start with our new chapter, that is rational number. Keep in mind, as I already told you, after this Diwali holidays, there will be your test on comparing quantities. I am sending you the PDF of the extra questions based on chapter comparing quantities. Kindly go through it and solve the questions. If there is any doubt, I will take a live class after your test or before. Okay, whatever the conditions may be. So let's start with the new chapter, that is rational number. So in your previous classes or in your previous chapters, you have understood various different types of numbers, starting from natural number, then we understand whole number, then there was integers, after that integers there was fractions, after the fraction there were decimal. Now we are moving to our next type of number, that is your rational number. So what is a rational number? Let us understand. A rational number is basically a number that can be expressed in form of p upon q, where p and q are your integers and q does not equals to 0. सो रैशनल नंबर क्या होता है बेटे? एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक जैसे p अपॉन q. यहाँ पे जो आपका q होना चाहिए वो p और q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है. देन इट शुड बी व्हाट? इंटीजर्स. p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी द कंडीशन फॉर एनी नंबर टू बी अ रैशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो p है दैट इज ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. तो डिनोमिनेटर है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए. ये बोलता है रैशनल नंबर की कंडीशंस को. सो सम एग्जांपल हम देखते हैं रैशनल नंबर के. सो इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल इज 3/4. सो इफ यू सी on the top there is 3 and on the below that is 4, and 3 is your positive rational number, again 4 is your positive rational number. डिनोमिनेटर में 4 है, जीरो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रैशनल नंबर कहलाएगा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, अगेन 11/7. if you see on the top, that is on the numerator there is plus 11, and below it also there is 7, which is also a positive integer. Both are positive integers, hence this is also your rational number. Now coming to the next one, this is 45. As I have already told you, if there is nothing written on the denominator of any number, then there is by default what? 1. So this 45 will be equals to what? 45/1. If you see, the numerator is 45, which is also an integer, denominator is 1, which is also a integer. Both are what? Integers, hence this 45, or we can say 45/1 is your what? Rational number. Now coming to the next one, this is 9/14. if you see, the number is in form of p upon q, where p is your -9 and q is your 14. तो p क्या आपका? -9 नेगेटिव इंटीजर है, और 14 क्या आपका? पॉजिटिव इंटीजर. दोनों क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर क्या है? एक इंटीजर का टाइप है. सो दिस 9/14 will be your what? Rational number. Why? Because in the denominator there is 14 and 14 is not equal to 0. 14 0 के इक्वल नहीं. 14 is different, totally different integers. So this is also your what? Rational number. Now coming to next one, this is 4/-13. So on the numerator there is 4 and on the denominator there is -13. So this 4 is your positive integer, whereas that -13 is your negative integers. So hence both are integers, and this is in form of p upon q, where q is your what? -13, which is not equal to 0, hence this is also your what? Rational number. Now coming to the next one, this is -18/-18. If you see that both are what? Same numbers, and they are integer also. Both are negative integers, same number, hence this -18/-18, अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1. and this -18/18 is your -18/-18 is your also what? Rational number, because both are your negative integers and the denominator is -18, which is not 0. Now coming to next one, this is 2/2. Again both are the same number and both are what? Positive integers, hence this will be also your rational number. Now coming to last one, this is 0. So I told you, whenever there is nothing written on the denominator of any number, there is what? 1 below it. So this is 0, so this will be 0/1. So if you see, 0 is your integer, yes, 1 is also your integer, and p is your 0, q is your 1. यहाँ पे देखो q आपका 0 नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? 1 है. तो hence this is also your rational number. ये भी क्या होगा? आपका rational number होगा. ठीक है. So I hope you understood what is a rational number. Now we will see what all numbers cannot be a rational number. वो नंबर जो rational number नहीं होंगे. So these will be your what? 3/0, 37/0, -91/0, 0/0. If you see, what is there on the
in this number 3/0, p is your 3, q is your 0, but rational number के लिए q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए rational number नहीं है. सेम वे हेयर ऑल्सो 37/0, डिनोमिनेटर में q क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा. यहाँ पे -91/0, अगेन वट इज देयर 0 अंडर डिनोमिनेटर, दैट इज q इज 0. तो जब भी आपका 0 डिनोमिनेटर में होगा वो कोई नंबर होगा ही नहीं, दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं हो सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता number. So this 0/0 again denominator में 0 आ रहा है, this is also your not what rational number. So these are what not a rational number. So I hope you understood what are rational number and what are which are not your rational number. Now we'll do one more topic, that is equivalent rational number. Now our next topic is equivalent rational numbers. Now what are equivalent rational numbers? Equivalent rational numbers होते क्या है? These are basically rational numbers having same value. वो रैशनल नंबर जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम नंबर, दे आर नोन एज व्हाट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. वो सभी रैशनल नंबर जिनकी वैल्यू सेम होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ अ गिवन नंबर? वी कैन फाइंड आउट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ एनी गिवन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग गिवन रैशनल नंबर. जो आपको रैशनल नंबर गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करके, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर आपको दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, एन एंड डी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करना है, गिवन रैशनल नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करना है, सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है. ठीक है, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट वी हैव फाइंड आउट इन योर फ्रैक्शन. तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो इंटीजर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टू ऑब्टेन व्हाट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है -3/5, इसके मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है. बट आई हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ दिस -3/5. सो मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ वी कैन डू दैट. वी कैन ईदर यूज द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट बट rational numbers. So multiplication is quite easy, so we go for a multiplication for finding out the equivalent rational numbers. So this is -3/5. तो -3/5 को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. तो दैट इज आई एम टेकिंग 2, so this is -3 × 2. अगेन आई मल्टीप्लाइड दिस 2 बाय ऑन द डिनोमिनेटर. जिससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें उसी से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज -3/2 इज योर -6, 5 × 2 इज योर 10. तो -6/10 विल बी द equivalent rational number of this -3/5. Again we can make infinite numbers because हमारे पास infinite integers होते हैं और infinite, तो we can find out infinite equivalent fractions, अनगिनत equivalent fractions निकाल सकते हैं, किसी भी equivalent rational number निकाल सकते हैं किसी भी given rational number को. This is -3/5. अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply numerator and denominator of this -3/5 by the same different number. अभी हम 2 यूज कर देते हैं, हम यूज करते हैं 3. तो this is -3 × 3, क्योंकि 3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में 3 से. तो -3 × 3 इज योर -9, 5 × 3 इज योर 15. सो दिस -9/15 इज ऑल्सो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस -3/5. नाउ वन मोर यू कैन फाइंड आउट, -3/5 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो आई एम टेकिंग 4, आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 4. सो दिस इज -3 × 4 on the numerator and 5 × 4 on the denominator. So -3 × 4 is your -12, 5 × 4 is your 20. So -12/20. This is again the equivalent fraction of this -3/5. तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, किसके, रैशनल नंबर के. सो नाउ 4 से कर दिया, आप कोई दूसरा नंबर लेते हैं, नॉट इन द सीक्वेंस. आई टेक 10. दिस इज -3 × 10. Again on the denominator I will multiply it by 10. So this is -3 × 10 is your -30. And 5 × 10 is your 50. So this -30/50 is also the equivalent fraction of this -3/5. I hope you understood the concept of equivalent fraction. So equivalent rational number. The equivalent rational number is a rational number representing the same value, and these can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator of given rational number by the same non-zero integers. So now we will come to the exercise, that is exercise 9.1. Directly we are moving to the question number
3, in which we have to find out 4 rational number equivalent to. So we have to find out 4 equivalent rational number of given rational numbers. Now after that we will move to question number 1 and question number 2. First of all, we will find out the question number 3 of your exercise 9.1. Now this is the third question of your exercise 9.1, in which we have to give 4 rational number equivalent to, second part I am doing 5 upon minus 3. So मैं 5 upon minus 3 के 4 equivalent rational numbers आपको find out करने हैं. So at the number given to 5 upon minus 3. So this is your rational number. This 5 is your integer. Minus 3 is also your integer. Minus 3 is your negative integer. 5 is your positive integer. So this is a rational number because the q, that is denominator, is not 0. Since it is minus sign on the denominator, so if any number is there in which there is a minus sign on the denominator, this minus sign goes on the न्यूमरेटर. डायरेक्टली कहाँ चले जाता है बेटा? न्यूमरेटर में चले जाता है. अगर फाइनल में उसका आंसर किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है. तो दैट माइनस साइन गोज ऑन द न्यूमरेटर. सो ये क्या हो जाएगा? माइनस 5 अपॉन 3. सो दिस 5 अपॉन माइनस 3 सेम एज माइनस 5 अपॉन 3. नाउ दिस इस माइनस 5 अपॉन 3 के हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर बाय द सेम नंबर. सेम नंबर से न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो कितने फाइंड आउट करने हैं? 4 फाइंड आउट करने हैं. तो हम 4 डिफरेंट नंबर से क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके? रैशनल नंबर को. दिस इज माइनस 5 अपॉन 3. तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. तो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में 2 से. तो माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 इज योर माइनस 10 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज योर 6. सो दिस इज माइनस 10 अपॉन 6. ऐसे ही माइनस 5 अपॉन 3 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 2 से कर दिया, आप किससे करते हैं? 3 से. तो माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3. तो माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इज योर माइनस 15. 3 मल्टीप्लाई 3 इज योर व्हाट? 9. नाउ अनदर, दिस इज सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ऐसे हमें 4 निकालना है. तो दिस इज माइनस 5 अपॉन 3. अब हम चलो किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके जा सकते हैं. आई एम टेकिंग डिफरेंट नंबर्स. तो मैं अब 6 लेता हूँ. तो 6 में मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया, तो 6 से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. तो 5 मल्टीप्लाई 6 इज योर व्हाट? माइनस 30 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 6 इज योर 18. दिस इज ऑल्सो द थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ योर व्हाट? 5 अपॉन माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3 ओनली. नाउ 3 हो गए, 4 निकालने. तो माइनस 5 अपॉन 3 अगेन किसी भी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो अब 7 से ही कर लेते हैं. माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 7. तो दिस इज माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इज योर माइनस 35 एंड 3 मल्टीप्लाई 7 इज योर 21. So this minus 35 upon 21 is also the equivalent fraction of this 5 upon minus 3, which is equals to what? Minus 5 upon 3 only. So I hope you understood how to find out the rational numbers, equivalent rational numbers from the given number. In the next video we will solving question number 2 and question number 1 of your exercise 9.1.